how it goes. Good evening, Sarika Ham. Joto tibrasa takok bukuk songno. Tini initiation bo ang Hindi beklaina mo chungo because this message is not just for Tibrasa people, but it is for all the Tripuris. Not only Tripuris, we can see the all over public. So आज हमारे साथ आए हैं मिस्टर सैमुअल देबबर्मा, जो फार्मेसी का स्टूडेंट है, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, को क्या नाम है, बैंगलोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है इसी साल। तो कुछ लोगों ने इनके वीडियोस देखे होंगे, कुछ न्यूज़ चैनल या यूट्यूब में देखे होंगे। तो आज हमने इनको यहाँ बुलाया है ताकि हम लोग और क्लियरली बात कर सके इनकी वीडियो की एग्जैक्ट रीज़न क्या था और वो वीडियो में आने के लिए आने क्यों पड़ा, वीडियो में वो सब बात बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वो सब डिस्कशन आज हम करेंगे, लाइव सुनेंगे हम लोग। आप लोगों के पास अगर कुछ डाउट है, पॉइंट्स है लाइव वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम जितना हो सके हम आप लोगों को रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। सो द टॉपिक इज द इश्यूज विद द स्टूडेंट्स, न्यू एडमिशन स्टूडेंट्स। तो सैमुअल, वेलकम Tripa People Foundation nang Chajakmani bagay kailan hambay nang chungno asawi to kurungi to phaiga sungma baksa suni yoro phaimale bagay. Thanks for trusting on us and thanks for believing on us that you came forward with your complaint. नंग जो complaint खाना मुझे मनी खाई पेगा हिम्मत लाके करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से आप समझाएं कि हुआ क्या था, आप लोग बैंगलोर कैसे पहुंचे, कांटेक्ट कौन करे थे, आप लोगों को कौन क्या बोला था, क्या सोच के आप लोग बैंगलोर आए थे पढ़ने के लिए। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट एंड बाकी का स्टोरी आप प्लीज अच्छा से बताएं। बी क्लियर एंड लाउड। हिंदी में बोलो और इंग्लिश इफ यू वांट इन इंग्लिश, हिंदी में, बिकॉज आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड। You can mix and say no problem, okay? Because यहाँ सिर्फ देबबर्मा कॉकब्रोक बोलने वाले लोग नहीं हैं, यहाँ हमारे यहाँ हलाम, रांगखोल, नवातिया, रियांग वैसा लोग भी हैं जिनको देबबर्मा या कॉकब्रोक भाषा समझ में नहीं आती। तो हम चाहते हैं कि सबको समझ में आए, इसलिए हम हिंदी में ये सेशन आज करेंगे। So you are with me? Yes. My name is Samuel Debarma. I'm from Mombasa, and the main thing is जो हुआ है पहले हमारे बोर्ड एग्जाम से पहले हुआ है। So हमारा लास्ट एग्जाम चल रहा था, इट्स मैथ्स एग्जाम चल रहा था। वहाँ पे भाचिया बाहर रहा था सुकुमार का LM की जो कॉन्स्टिट्यूट करके, तो हमने वो लिया। तो एग्जाम खत्म हो गया, 2 महीना हो गया, नीट का प्रिपरेशन भी चल रहा था। तो जब हम नीट का प्रिपरेशन चल रहा था, हमने कांटेक्ट किया सुकुमार से। जब किसी को तो कोई भरोसा नहीं है नीट क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग को भी बैकअप चाहिए, इसलिए हमने सुकुमार को कांटेक्ट किया। सुकुमार को कांटेक्ट करने के बाद वो बोला हाँ, मैंने पूछा सर बेंगलोर देहरादून में एग्रीकल्चर का कोई सीट मिलेगा, मैंने पूछा। वो बोला हाँ मिलेगा। तो 2-3 महीने होने के बाद लाइक मैं डेट बोलता हूँ पूरा। ओके, डेट एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है, वो क्या है वो एग्जैक्टली बस उसने हमको फोन किया। तो उसने बोला जब मिलते हैं काउंसलिंग करेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या कौन सा कॉलेज अच्छा है देहरादून का, कौन सा बुरा है, तो कितना फीस स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह उसने बोला। तो उस वहाँ पे अच्छे से गया। और फिर सिर्फ 2-3 वीक्स के बाद लक्ष्मी आया बेंगलोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से। तो सुकुमार ने फिर से हमको कॉल करके बोला MD लक्ष्मी KS आया है, एडमिशन इंचार्ज आया है बेंगलोर ग्रुप से, तो आ जाओ थोड़ा मिल लो। तो हमको VIP राधानगर VIP होटल पे बुलाया, तो हम गए। राधानगर VIP होटल पे बुलाया, हम गए। वहाँ पे सुकुमार के साथ और एक उसका एजेंट था। नाम क्या है उनका? उसका नाम तो नहीं पता, फोटो है। और एक फैमिली है, उन लोगों को इनवाइट किया है। एंजल का पेरेंट्स को वो लोग बुलाया है। और एंजल कौन है? वो सेकेंड ईयर एंजल इज स्टूडेंट सेकेंड ईयर है। और उसका पेरेंट, उसका मम्मी और पापा आया और लक्ष्मी को लाइक प्रिविलेज दिया, हमारा त्रिपुरा का रिकनाई रिसा दिया। तो हमको भी
थोड़ा अच्छा लगा। हाँ, हमारा कल्चर को वो लोग आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने हमको हम पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दिखाया। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, अभी वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पहले बेंगलोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट था वीडियो में, और फिर जब हमने एडमिशन करके जब यहाँ पे आए तो तब बेंगलोर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है। तो हमने सुकुमार से पूछा, सर तो पहले एडमिशन से पहले एडमिशन से पहले वो उन लोगों ने बोला अच्छा है आपका कॉलेज, वो कॉलेज अच्छा है, इनको बेंगलोर में टॉप 10 में आता है। तो टॉप 10 कॉलेज में तो कौन पढ़ना नहीं चाहेगा। तो टॉप 10 कॉलेज है, आपको लोन फैसिलिटी मिल जाएगा, स्कॉलरशिप फैसिलिटी मिल जाएगा, लोन भी 100% गारंटीड है। और जब लोन वेरिफिकेशन नहीं होगा हम खुद अपॉइंटमेंट लेंगे आपका बैंक मैनेजर से, वो खुद अपॉइंटमेंट लेके हम आपका लोन सैंक्शन करवाएंगे, स्कॉलरशिप भी 100% मिलेगा। तो उन लोगों ने बोला और हमने भी ट्रस्ट किया। तो लाइक 2024 का 8 समथिंग होगा, फेलिसिटेशन हुआ है कुमलुंग में। वहाँ पे चीफ गेस्ट है EM रविंद्र देवर्मा सर, और कंसल्टेंसी करने वाला है लक्ष्मी आया है, डॉक्टर सुरजीत है और डॉक्टर नरोत्तम है। और वो लोग डॉक्टर नरोत्तम का रोल क्या है इधर? वो बोलता है कॉलेज अच्छा है, हमने भी जाके ओके, रेफरेंस फ्रॉम डॉक्टर नरोत्तम, राइट? रेफरेंस दो, डॉक्टर नरोत्तम ने आप लोगों को कॉलेज के बारे में अच्छा बोला। कि डॉक्टर नरोत्तम ये कॉलेज से किस तरह जुड़े हुए थे, कुछ पता है? वो तो नहीं पता, बट वो लोग मिले हुए थे सुकुमार के साथ। और सुकुमार देवर्मा एंड और एक है पास्टर दानू देवर्मा, वो एंड सासा का प्रिंसिपल है सुकुमार, वो उसका नाम भी सुकुमार देवर्मा है। वो मीन्स वो होस्ट कर रहे थे प्रोग्राम को, वो बोल रहे थे बेंगलोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट अच्छा है, वो है। तो और फिर वो उन लोगों ने भी न्यूज में बोला, और मेनी पेरेंट्स ने भी बोला है क्या वहाँ पे लोन गारंटीड होगा। लक्ष्मी खुद बोल के गए प्रेस पे, 100% लोन गारंटीड है एंड 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। और वहाँ पे 3-4 न्यूज। यहाँ आने के बाद क्या हुआ? तो यहाँ आने के बाद पहला महीना पे जब आए तब हमको पीजी में ठहरा के, और एक नेक्स्ट डे और एक बेंगलोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का एक वर्कर आया, हमको वहाँ से पिकअप किया बस से। तो बस से पिकअप करने के बाद जब हम आए, हमने पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक देखा जो हमको दिखाया गया था। तो तब बेंगलोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट नहीं, बेंगलोर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट था। क्योंकि बेंगलोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इज डिफरेंट, राइट राहुल? एंड आफ्टर दैट वो हमको एडमिशन ब्लॉक में लेके गए। वहाँ पे हमने हमारा फॉर्मेलिटीज किया और उसने बोला डॉक्यूमेंट्स दे दो। मैंने पूछा क्यों डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए? वो बोला आपका रजिस्ट्रेशन करना है इसलिए हमको आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, 1-2 महीने में या 1-2 वीक में मिल जाएगा। बट कौन से डॉक्यूमेंट्स? बोर्ड एग्जाम मार्कशीट, 10 मार्कशीट, ओरिजिनल दिया, ओरिजिनल उन लोगों ने ओरिजिनल। तो ऐसे ही गुजर गया धीरे धीरे से। तो रात में हमको वो भी एक है, वो जब हम आए उस दिन में हमारा एक प्रॉब्लम हो गया था लक्ष्मी के साथ। उसने बोला कि हमारा तो लोन स्टूडेंट है, उसको भी पता है, फिर भी उसने मुझसे मांगा है यू हैव टू पे 80,000 या 90,000 बाय टुनाइट। सो मैंने बोला मैम यू नो दैट आई एम ए लोन स्टूडेंट, सो हाउ कैन आई पे दिस? तो हमने एडमिशन नहीं किया। तीन लोगों ने एडमिशन नहीं किया, हम बाहर में खड़े रहे। तो इट्स लाइक 2 o'clock वी स्टैंड एट बेंगलोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आउटसाइड इन कैंपस, बट आउटसाइड कॉलेज ब्लॉक। तो तब आप लोगों को कुछ लगे नहीं थे कि ये सब कुछ गड़बड़ है? We are calling Sukumar. We called. He is coming with flight. He said he said in Kolkata. I'm late. Train flight got missed. I'm late. So my parents also just start calling one by one because they are worried some, and they are calling. He said that I'm coming. And when he come and reach in Bangalore, he's like, I'm coming. He's just saying I'm coming. I reach that much. 1 hour or 2 hours. It passes and it becomes like 3 a.m. 3 बजे तक?
morning 3 a.m. So after that we said to Sukumar sir, what have you said in this and where we are going to study? And he said in Mole Beteksi. Branch. Moke Beteksi, Moke Busle. Get Beteksi, Moke Busle. Still we didn't give our money. Manipulation, no? Or what do you say that? Mind manipulation. Psychological. After that we went and the place he bring more 3 students. And one I'll mention, she is from Saikar, from Dolai Tripura. What's her name? Rombuli. She came because they saw in news they went for felicitation. And they said 100% loan guarantee and 100% scholarship. And they went to Sukumar office, which is ex-Anil Sarkar residence. Ex-Anil Sarkar residence. Chandrapur नहीं है वो क्रॉप करी हुआ है खामन तांग कम they went there, they met with Sukumar and they said that, then Sukumar said to Rumbuli's parents that 100% loan guarantee and plus scholarship, and they haven't paid too much money because they are once a year they will get money. Because his father is a farmer. So they trust Sukumar and they went and at night that Sukumar he said that if you can, and he should Romboli already she said that I will not study sir because the things is too expensive at night. फिर उन्होंने क्या बोला? Sukumar ने क्या बोला? Sukumar is saying you can do work and study. If you come for studying, you study. Why are you not taking admission? This, that. And after that, it's like almost 4 o'clock morning. It's almost 4 o'clock. We went out. We went PG in Carmelaram, and they went in girls PG. We don't get to enter college hostel. PG कितना दिन रहा PG में? 2 days. Okay. And then later you got an entry to hostel. And later next day we went hostel like it's like 2 p.m. or 3 p.m. After finishing all Next day after finishing all works. Okay, that is understandable because till the time you don't complete your formalities, you don't get to enter into hostel. And after this month passes, an NSP scholarship has launched already, and we have called to Sukumar, and first day he received. And we said, sir, student they want to do a scholarship me too. I will not get because my father income is higher than this. So what about others? And then he said, I'll do it. It passes like weeks, and he said that at the last moment he'll do. Okay. At the last moment he'll do. Like it's like the day is over like 30. On 25, on 15, on 21 I'll do and give. Don't worry. He said like this. And when the time comes for uploading documents, the thing calling. Some of them he didn't even do some of the other things like Ilya, Jumika, they have done from outside. They have done from outside in shop in Kumlu. And more others than they are calling, sir, when will my scholarship will be? Are you doing? When will you are doing? करके देगा कि नहीं देगा करके सुकुमार को पूछा तो सुकुमार हम लोग कॉल करते रहे. सुकुमार रिसीव नहीं करता. जब भी रिसीव करता है मैं बिजी हूँ कर देता है, मैं बिजी हूँ कॉल कट कर देता है. And it passed like 2-3 weeks we are calling him, and again when the time comes for uploading documents of bona fide, he is not receiving call. He is fighting with us, and he said this I'm doing. What can you know? My laptop is not good. And that he's saying बहाना मारने लगे. Excuses. He's making excuses, and उसके बाद आया vacation time. Vacation time में आके हम घर आए. घर आने के बाद फिर से now hostel में आए तब पता चला 1,60,000 हम तो सिर्फ लोन में सेमिस्टर फी ही लेते हैं और फिर हॉस्टल फी हम अलग से देते हैं. That is from our side. Okay. And they said management they said it's on. I paid already 25 first when I come, and after this I have some accountant. How much did I need to pay more? He said
you need to pay more 1,60,000. And then I said, So then it comes 1,80,000. yeah. You already paid 25,000, Yeah. right? So 1,60,000, it's like 1,85,000. Yes. Pharmacy, right? Yeah, B pharmacy. B Farm. Yes. B Pharmacy, B yeah? pharmacy. This 3 years course. 4 years. 4 years course, but okay. What's your total fees that they told you? The total amount of the course? 1 year, first year 150 without hostel, second year 60, third year 60, fourth year 60. बस बस. नहीं तो इसमें भी तो कुछ घोटाला है. बहुत है. The information is wrong. I mean, the fee structure itself is wrong as per our knowledge. Okay, let me introduce you to our student leader, one of our student leader, Mr. Rahul Jamatia. I know he has he is an expert in researching the colleges and getting to know on most of the fees of different colleges and different courses. And we have here our Mr. Prantos Devarma, our Vice President of Tripura People Foundation, who came to witness today's interview or today's discussion on the student part. So I would like to give an opportunity to Mr. Rahul to inquire or ask any type of questions that the student groups would need to have to solve this type of issues. So Rahul, please take it over. You can come a little more closer if your voice will be there. You can ask any questions or cross questions on how they came, what will happen based on all the information that you need to solve this type of issues so that this doesn't get repeated in the next year. Okay, so good evening everyone. I'm Rahul, currently the joint convener of the ISF Bangalore. And since prior years we have started working, हम लोग काम करना शुरू किए थे, starting with this admission scam only. But we have thought that कि next year को ये नहीं होगा, in coming future it won't happen once it has started. But it has not as such. It has been increasing day after day, and which is really shocking, and it is really unthinkable because apart from admission scam, we have many other issues to deal with. But again, the same admission scam with the same facts, with the same detail. अभी अगर कोई student हमें call भी करता है, तो we just ask them directly, and we got to know that again that is an admission scam. So whenever we go on deal with it, admission scam, it starts from educational institution, right? That means that it is a public interest institution which work for public, and it requires immense number of public to get support. Admission scam rong deal kind of thang khang, whether the ISF Bangalore unit whether the Practical Foundation without support of people, it cannot be solved as such. And जो recently हम लोगों ने जो solve किए थे TISF जो cases admission scam, same facts, उसका भी public का support मिलने से ही कुछ हद तक cases registered हुए हैं, कुछ backup हुए हैं because most of them want to go discreet, and कुछ अभी भी pending है. But sooner or later we have been working on that same stuff. So first question, sini tapunan sengan musuh. Samuel Debormano, since he came forward, it's a motivation for all of us. Like belai khatungman ite to kha thansawai phaiga, because we all, without having food, without having drink, without having anything, we are working. We all are workers, and most of them are students. But still, time help because we have sense of unity. So again, question the first starting summer, our admission ni je khanaka. Afro nini je main motive ta nang khagawe our Bangalore admission na nahi afro paimani. Is it the media or no with the direct paimani, or else some connection khawi de paile, or else o agent there bo parao paiwe means bo je receive bakha sini Pamphlets. pamphlets bahay chikon to paper hai The newspaper insert pamphlets. Okay. तारपरे आम्बा भाई जों माले खांगा कॉल करेगा इनके कॉल करे कॉल सका मैं आंखों बनो फास्ट सामने सारा बेरा गुना सुपर नहीं but bo आरपरे
2-3 weeks ପରେ ବସାଉ Bangalore Group of Institute ni ko administrative file ni ge sombo malai kata malai ya kono admission ka bonsono sports ground ro kam kono ka samani ro ka hamin so jot north east style kono south Indian style pero to south Indian style to ko anga ke ko means meal over 4 times ro ko masane ko ko chicken ro means meat non veg singa अब तो हॉस्टल चुंगो बुझू एनी टाइम पण सारी मानो आबो हम कुन दिक्कत करे बट जेफ्रो टाइम पास रांग को कॉलेज फी नि बोनाफाइड बे कॉलेज फी सामाने चेंज हुन था इगे चुंगाबो सुकुमार न सका सुकुमार साव पर बसाउ आ मैनेजमेंट में कोक सनाय न मैनेजमेंट में कोक सादी नॉन मैनेजमेंट में कोक सेको बाके में अरे चार चुंग मैनेजमेंट में कोक आम सा बुझ सारे के आं तो दादा सुन मैनेजमेंट में सारे जाय बरो से ओनली सिस्टम अब नुता काम केना बो सुन सैनिया इन सब कांगे आपरे सुनो थाम प्रो बसा स्टार मोटो बुता बसा में क्या something documents na in some na riwano am na riwano no time pass on na so do shop le to ngan bata so do te action na mi kuno documents ka sane ri mi bata tam sa sane no okay so nang video climber ni pore nini log yo to I think you got a lot of calls ko call phega ko koi jana student on call phega an thane ko phega Sukumar kunda sahar kana rama mani ni parents no kunda or video ni kunda sahar eh bosao video delete khai ta se video khlai di na Elias no bosao video delete khai ta se video khlai di that I'm innocent bujiliya tama video je jong video post khai mani ko chini ko tv wa aro video bona sao video delete khai in sao plus the video ta se re-upload khai di no je bo innocent ne ta se video So basically, you want to get an apology from students, but it doesn't make sense at first place. Plus, they bosono te. Am meantime, ano bosono like threaten bokai ga. Threaten. Bo chin bong te case nahi so. Threaten case. Tamani under case. Abo to same bo so so case na bane to recordings bo mo je samane recordings. Ane saban ni to case ro na ne parents da na ni discussion nahi kida ro na. Means an Ilya Jumika ni to case nahi. Mane je video final ni upor bo case nahi. Mane tamo no dui bo mane tam topic no tui bo no bo case nahi sa. Abo ke sai bo case nahi. Bo case nahi. Aman pore te kono. Aman pore inke bo parents no call khega parents no call sa like no parents bo so sa tamo no ama ha amai tang lagi ko ni para ge bo parents no sa batanga especially bo Jumika ni parents no call khai ro ko call khai ro bo sao ko Jumika ka ta samai be alien ko khana se ama hingo bo to ko bo saya am te bong ya ni sa ta Ye sab saga. ha Sukumar Jumika ni parents no Jumika ni parents no Jumika ne okay so Jumika Ria right Jumika Ria's father spoke to me this morning okay Jumika Ria ni bin parents no ko khai sa ro na bo ta am te bong ya samai chung ko khana chung go Elias ko khana chung go bo means bo khai yang to mani no bo bin ne bo ka loan approve khang ka thana hin chong mani but still bo khai ka bo khai pro ke je pro bo loan ni bo gai bank of thang apu khai se approve pun ya gete ka sang ke je pro scholarship khai pro bo chini to Dhanwantri College of Pharmacy umya wo se Sukumar Saslang Devar mani bini Saslang Devar mani scholarship khai pro bo BSc nursing ni ungkorisa de unga pharmacy ni dia kare BSc nursing bo college ne re arni no Florida College of Nursing na ta khai Florida Abo ke affiliated koro jaro RGUS no means je bo onke actually bo pharmacy student actually bo pharmacy student but bo point scholarship this is included in the scholarship scam first point bini kaise phai ta kaise thasing angel in samani angel bo scholarship man tha Angels ke scholarship man ka bo khai angel get scholarship bo khai IFA University in Silvano Bangalore Group Institute Oh, actually ek thyroid already demand hai bo IFA he bo jefro ajaga admission no bo admission pro IFA University ni Sukumar Bangalore Group of Institute ni khai ria bo khai ru ngo IFA University ni ek five bo jagani Tripura
Wow. Bagi khaima khamo. Bo because boka are an ex student. Bo are no pare san. Okay. Angel is an ex-student of IFI University. IFI. But he got admitted to Bangalore University, right? He shifted. Bangalore. He shifted or readmitted? Readmission. How can Tripura ni or the shift time? They have to get readmitted. Bo are pore ya kare or paipor pekata. Hey, but okay, or paipori pekata. But still, his scholarship was From go been ex school names. from ex college. IFI But University. how is it possible? कि IFI रोके बाहर के inquiry clear, मैंने approve clear. I mean, I'm a pattern tongo. Like, if I first thing about the private university, so whichever borok je bisingo tam borok khali tong, it's up to their discretion. So there is a possibility for khaimano, and one more possibility is there may be some connections in it. And and there is a also sense of connection that if I need the student of they want to make them connect that they are our students. ये हमारे students हैं, हम लोग ने उनको readmit कर दिया है, but still we will be helping them. Okay. So इसके अलावा, do you know anybody else who got scholarship in your present college from any other colleges? No. From Tripura ni Tripura from Tripura to ST Corporation to NSPC. Okay, jet Tripura ni pani bo masa se first. Bo Angel. Bo tak su jore to scholarship mai. Oh, college of high scholarship man. Last year or the Bo this year bo apply kika, but this year bo scholarship mai. Last year ke bo IFI University. This year का बहुत English में apply किया है. Bo Bangalore Institute. Bangalore Group of Institute. Okay. They are like okay, they are parent company, branches, colleges. Okay. They are connected. Okay, that is agreeable. Now, tini just as हमारे नाम सुकुमार नहीं parents ने call किया, जुमे का नहीं parents ने call किया, Alien ने parents ने call किया, not a video relation money पड़े. ताबो नहीं parents ने तामन साहब का जुमे का नहीं पता तामन साहब का बा Alien ने parents ने तामन साहब का video नहीं था. तनी तय बाकी two other girls their video final of family because Jumikan parents na kaya bodare case nahi sa. case remains how मतलब सुकुमार case remains नहीं Jumikan parents no हम क्या सार मुझे Chinpung student हो मुझे अच्छा उल्टा चोर को टुवाल को डाटे माइंग तारो है ना ब्ले शिकोक बोनो खलाएगा अनबोनो दा case बोलने का point okay I'm not against anybody in this point understanding the situation or understanding this case Rahul को point है तो हम सागर नहीं थे ऐसा pattern लोग जगह like almost 3 years I've been researching on this admission stuff. Agent rock kami और hang ke there is one pattern. Bro pamphlets balai ni belai boy. Pamphlets itu masih saya it's like exo mayo sih nian besties abo hai ke sale mas abo hai income. And one more pattern that was being seen is that tabung ni je katal agent thane ro they have been charging and they are taking on spot. I know like see is a nursing institution on the engineering on the we have a council India or we have a council and probably under kaisa rules and regulation khazak tongo like if they have been appointed by colleges no. So some policy as an agent hoga ke admission but boro ne kaisa system tong boro to lahan suddenly agent maya so boro bahai ke on spot rang na ma kha o rang on spot whether it goes to institution or not whether institution boro verify de khai belai doubtful it's like biang than tong kuno saimya and after that they used to charge money around to charge khai ke no admission pa so na 25 san 25 san first GNM no 25 san 25 no lika but since BSc pharmacy was sasang level ma 5000 de admission the GNM ro 5000 lika 10000 ke any lika no 5 2100 admission okay the admission to okay there is just an admission okay amo to never mind and just pano rang way admission only mano as per our knowledge all of this amani so je loan now por khangke jini je loan ka baro tam to na uniform fee to me ko the tax ni to me ko free uniform free practicality nursing joto je practical phrangjam ne debak phrangjam mai there will be computer technology khainai am hai ke ba sa promise khani tongbai after that housing tongnai fooding tongnai hygiene tongnai
And if there is the health not to ile kunong protest halai tha health not to is how the apro sini alien is sorry hami ang go sa porimal yan so ang go ang sumar personally yung kono call kayo ang mo लिया एलिया प्रोबीनी ऑफिस को थंगा के सारा हम लोग तो हम थमंग लकिन समस्या एलिया ऑफिस थंगा बोले तो सुकुमार सुकुमार ऑफिस हम आपरो साउ लास्ट मिनट कॉल कइदा सुकुमार पर्सनली आपरो साउ ला डोंट वरी वी हैव आवर ओन हॉस्पिटल इन सो yang जेप्रो चंग एडमिशन खाय 2 months पर के सेमन थंगा तो आपरो के सीनियर को चंग मिलिले there was no hospital okay wrong information one more information thing tapuk nai to mero mas hamusugo not of the nursing nor ne just right no nursing college ni hi por pro one basic thing not of the verify khani one basic jefa agent titan we don't need to name any agent in specific jodi nor ne yang titan kha one just ask them one thing the college borok represent khaimani o college INC by approved khaijate khaijagya accredited khaijate INC kena Indian Nursing Council. It's a council bopura India on kuritango jemon CBSE all around India anto yane ba batai ke sundar option ni no INC o kebo je nursing comes up deng tong or else jodi private na khanke private affiliated tong tani ho khanke affiliated tong khanke or establishment niyam rok tong nai license rok tong nai so abo kaise credibility to ho so jodi admission angila hanke ni limsa kaise jago at least safe and secure aso ko tong or jaga ho batai ke tong so just by blindly thinking that कि मेरा बच्चा तो अभी बैंगलोर में चला जाएगा और वहाँ पे बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन होगा टेलीविजन और मीडिया से बहुत कुछ हम लोग दिखा सकते हैं बट इन ग्राउंड रियलिटी दैट विल बी टोटली डिफरेंट एंड often बरोबर माने गॉट इट एक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अब आई कैन गॉट इट है दिखाया कुछ और यहाँ पे जो रह रहे हैं कुछ और so yeah that is correct so some of the points we have taken down the points a couple of points not all of them but yeah couple of points जो highlight करने में हम कुछ point highlight करना चाहेंगे कि इनका ये जो situation आज हुआ है क्यों हुआ है कैसे हुआ है और कैसे करा गया एजेंट के थ्रू अभी देखो हम किसी की अगेंस्ट बात नहीं करना चाहते एजेंट है रहता है सब अपने अपने कमाई के लिए काम करते हैं राइट अपने लिए अपने फैमिली को चलाने के लिए काम करते हैं तो यहाँ ये जो बंदा सुकुमार देववर्मा करके जो नाम लेके आए हैं ये नाम आज पहली बार नहीं सुना है हम लोगों को इससे भी पहले हमारे पास 2-3 केसेस आ चुके हैं इनफैक्ट आप लोगों ने अगर मेरा पुराना वीडियो लास्ट वीडियो डिस्कशन विद स्टूडेंट्स अगर उसमें देखोगे तो उसमें भी एक स्टूडेंट इन्हीं का था सुकुमार देववर्मा का ही स्टूडेंट थे जो प्रॉब्लम हुआ जिनको हम लोगों ने कॉलेज से निकाला 1-1.5 बजे तक पुलिस स्टेशन में रहा उसको छुड़वाने के लिए तो दिस इज नॉट द फर्स्ट केस दैट वी आर गेटिंग इन द नेम ऑफ सुकुमार देववर्मा बट सिंस वी आर क्लोलेस सिंस वी वर एविडेंसलेस कोई सामने आना नहीं चाह रहे थे हम कुछ नहीं कर पा रहा था या कोई वीडियो में जैसा अभी सैमुअल आया बहुत बहुत धन्यवाद और 2 लड़की जो आया एलिया और जुमिका रियांग उन दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि यस आप दोनों ने हिम्मत करी आप तीनों ने हिम्मत करके आप लोगों ने एजेंट की अगेंस्ट बात करे विच इज एन आई ओपनिंग डिस्कशन लोगों को हम इंतलाह कर पाते हैं कि इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ऐसा भी हो रहा है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये इन लोगों का पहला प्रॉब्लम नहीं है सिमिलर प्रॉब्लम हम लोग पिछले 3-4 साल से हैंडल करते आए हैं हम लोगों ने सोशल मीडिया पे आने की कोशिश करा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करा मैं खुद बहुत बार मेरा लाइव वीडियो पे बहुत बार बोला था मैं बट आई नो कि ऐसा टॉपिक को लोग देखते नहीं है या ना सुनते नहीं है पर आज सिंस दिस इज अ टॉपिक विद द स्टूडेंट ऑन द इश्यूज कि आप लोगों ने सैमुअल और 2 लड़की की वीडियो देखने के बाद बहुत वायरल हो गया या फिर बहुत व्यूज भी होंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप सब ये वीडियो भी देख रहे होंगे अभी हम कहना चाहते हैं कि ये जो एजेंट है इन्होंने बहुत सारा प्रोमिस करा पहले तो बताया कि 100% स्कॉलरशिप करके देगा उसके बाद बोला कि लोन फैसिलिटीज भी दिला देंगे बट पॉसिबल नहीं हुआ एंड यहाँ आने के बाद पता चला कि इन लोगों का INC अप्रूव भी नहीं है
which is like a college without INC is equal to 0. It's a waste. It's like, it's not even a classroom. वो एक धर्मशाला जैसा, धर्मशाला क्या बोलता है? It's literally Dharamshala only. Yeah, it is like a dharamshala because it's just like a PG because you don't have an INC approved, so they're like waste. तो ये सब हमारे बच्चों, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों को अभी फेस करना पड़ रहा है क्योंकि जो सो कॉल्ड एजेंट्स यहाँ जाके अपने कमाई के लिए इन लोगों को बहला फुसला के अच्छा बात बोल के लेके आते हैं और यहाँ लाके ढकेल देते हैं किसी भी कॉलेज में, दिखाते हैं कुछ और कॉलेज लाके बैठाते हैं किसी और कॉलेज में, दिखाता है खूबसूरत सी लाके डालते हैं भेल, राइट? इट्स लाइक गोइनॉक बस कमा तो फुनु का नहीं नॉक नो बट नो तोना नहीं फुनु का गनो गोइना को दायरे का है ना ब्लैक. सो अमो हाई सी प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू नो आवर एजेंट्स जो भी है त्रिपुरा के एजेंट्स, आज हम दूसरा एजेंट्स का नाम नहीं लेंगे क्योंकि आज की जो टॉपिक है ये सिर्फ अपना एजेंट मिस्टर सुकुमार देववर्मा के नाम पे है. अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स के नाम है, वही मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, बट मैं बताऊंगा नहीं अभी के लिए. लेट्स लीव द अदर एजेंट्स क्योंकि इन लोगों के बारे में कुछ कंप्लेंट्स तो आए थे और हमने ढूंढा भी था, बट अनफॉर्चुनेटली सिंस द स्टूडेंट्स डिड नॉट एग्री टू कम इन द वीडियो और टू फाइल ए कंप्लेंट वी कुड नॉट डू एनीथिंग. अभी मैं सीधा बताना चाहता हूं कि ये सब प्रॉब्लम्स इसलिए होता है क्योंकि हम लोग लापरवाह हैं. यह हमारी लापरवाह की वजह से होता है, हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है. अगर हम लोग एडमिशन के टाइम पे, जैसा हम पहले भी बोल के आए, आज भी वापस दोहराता हूँ, एजेंट के साथ जो भी बात करते हैं, हम ये नहीं बोलते कि एजेंट लोग खराब है या हर एजेंट खराब है, पर कोई ऐसा होता है ना, स्टूडेंट्स सिर्फ मिलने के चक्कर में, स्टूडेंट्स को लाके कमीशन मिलने के चक्कर में ये लोग कुछ भी प्रॉमिस कर देते हैं जो कि इन लोगों को खुद नहीं पता कि वहाँ होगा कि नहीं होगा, और जब प्रॉब्लम होता है ये लोग खुद भाग जाते हैं. और एक पॉइंट में तापुर और सामसुगो एजेंट का सिर्फ यही काम नहीं है कि ही विल जस्ट ब्रिंग द स्टूडेंट्स एंड ही विल जस्ट एडमिशन इन. एजेंट नहीं जखन ते जों साखांखे एजेंट हैव आल्सो दैट टास्क टू टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट एट द सेम যদি কোনো না কোনো ঘটলা হাংখে ও যে এজেন্ট যে স্টুডেন্ট তৈ ফেমানি ফুল রেসপন্সিবিলিटी না হই যে বপাই আসা জরাতেই বনো মেন্টর হাইকে গাইड খাইनानि अब बुनि कासे ड्यूटी दङ. सो इवन एजेंट्स रम नाइ दङ आखनि रब खनाइना दि इट्स योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स इन निर तৈ फैमिली बिकॉज you are the guardian now. निर बनो फुनो बै दङ खांखे what will be the use? And for the same again parents from one more thing, whenever agents rok khangkha or else nor agents rok no khangkhe, at least ask them affiliation and Sumani INC or else Rajiv Gandhi University of Health Sciences there or affiliated and license sandi. No agents will be there. INC by the affiliated koto je tomani without license they won't give without license. So start from very beginning basic missing question kaiwe verify kaiwe roho lai dino ni try roho. Okay. Tabo agents need verification okay, not only the verification. Here you have to take an agreement with the agent, an agreement written in white paper कि हम लोगों ने जो भी डिस्कस करे हैं पॉइंट्स, एवरी पॉइंट्स कि कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलेंगे, कॉलेज हॉस्टल भी देगा, बस प्रोवाइड करेंगे या रहने के लिए कुछ भी देगा, ये सब पूरा पॉइंट्स, जितना भी पॉइंट्स आप लोगों को एजेंट बोलता है पूरा का पूरा पॉइंट्स लिख के एजेंट का फोन नंबर के साथ उसका सिग्नेचर लो. उनका अगर कंसल्टिंग फर्म है तो उनका कंपनी का सील एंड सिग्नेचर चाहिए. उसमें विटनेस भी होना पड़ेगा. विटनेस टू बी लाइक एजेंट की तरफ से मिनिमम 4 होना चाहिए, एजेंट की तरफ से 1 या 2 एंड घर वाले की तरफ से 2 और विटनेस होना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक हम लोग हर बड़ी में अपना बच्चे लोगों को एडमिशन कर दे कि ये ना सोचे, क्योंकि एजेंट लोग मुझे पता है डराता है कि सीट्स बहुत लिमिटेड है, नहीं मिलेगा अगर लेट करेंगे, ताकि आप लोग ना ये उतावला होकर इनको जल्दी से जल्दी पैसा दे दें. और हाँ, एक और बात, जब एडमिशन होता है agents are not authorized to take any original documents from any students. Exactly. अभी जहाँ तक हमको पता चला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एजेंट को अगरतला में ही अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थमा देता है
और जब 15 दिन बाद आके कहता है कि मुझे और पढ़ना नहीं है, मेरे डॉक्यूमेंट दे दो, तो कहता है कि हमने ऑलरेडी कॉलेज में सबमिट कर दिया है, आपको वहां से उठाना पड़ेगा, विच इज रॉन्ग कि दे डोंट हैव एन अथॉरिटी। किसी एजेंट के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने हाथ में ले सके। ये पॉइंट्स आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेक each and every points that you discuss on a written paper. Usually जों admission जदि agent रने खाइर खांखे जे legally कैसे approve तंगो जे authorization from the college जे contract दुईटा contract नांगो दो staple खाइजा खाइ कैसे अंखनो institution नि कैसे खाइनाय सैजा तंगनाय ang haiti agent, I that agent been sponsored and been guided by that institution, been given the authority. I am representing that authority and I came here to have a visit to take the admission from this after onkenon the student nimbo mongrom rosujana and next page onkenon negotiation ni kaisa pattern tong terms and condition tong nai clause 1 clause 2 clause 3 amota ikhe and all jago suja tonai de ang amota ipong provide khai tongo agent will say I am providing this housing everything. And the student will also say that agree with everything. After that, documents will submit khainai amoronai, and then buni last umplog page on signature nai. That time je dara saman hai ke that will be witness, 2 witness from parents, 2 witness from institution side, and minimum 4 witness. Okay, nang jepa jaga thang the agent, jepa jaga agent kana thang the sun jodi future problem khan ke this document will be there. Tabak most of the cases or tabak the most of the cases that we deal, there is not even one single contract, not even one single contract that we have in hand. Some of the ukil robai tapok sign thanga, advocate robai kok sign thanga. They will ask, where is the contract? We have no contract. Some NGO we couldn't help them. No, nothing. Proof. The WhatsApp upon us a discussion kare, ba call live or recording kare. No agreement munaraza. There is no agreement like the agent has agreed to this and this and this college. ये college में admission कराएंगे करके भी कोई agreement नहीं है। हाँ, ये जैसे बोले थे कि हर agent के पास college का authority letter होना जरूरी है। They must have. अगर agent के पास college का authority नहीं है तो उनके साथ आना ही नहीं है। ये डरो मत कि आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, सीट्स खत्म हो जाएंगे, ये सब बात होती नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये सब कोई भी कुछ भी नहीं होता है। आई थिंक थोड़ा डार्क हो गया है। ओके, तो हम ये बताना चाहते हैं कि सब पूरी त्रिपुरा वासी अगर आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो पूरी इंक्वायरी के साथ ही करें। ये ना डरे कि आपके बच्चे को सीट्स ना मिलेंगे, क्योंकि नर्सिंग हो, बी फार्मेसी हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, अनलिमिटेड सीट पड़े रहता है बैंगलोर में। एंड देयर आर hundreds of colleges, hundreds of very good registered colleges. हम नहीं बोलेंगे कि टॉप 10 कॉलेजेस वगैरह नहीं बोलेंगे। अभी जैसा आपको बोला गया है, सुकुमार ने बोला कि या किसी और ने बोला कि दिस इज टॉप 10 कॉलेज, इंडिया का टॉप 10 कॉलेज में, हाउ कुड दे बी इन अ टॉप? वन मोर अब द टॉप 10 माने आं था मतलब इवन मी अगर मुझे खोलना है, इफ आई हैव मनी आई कैन ओपन एन इंस्टीट्यूशन, आई डोंट इवन नीड दैट मच फंड्स फॉर दैट। आई नो ड्रेस कैसा खरीदना डिनर सिंह नहीं, दे विल बी कुछ ऐसे करके कुछ कैनवस लगा दो, there will be institution and amata haike this scam have been happening. Even Karnataka government on record khaina raja almost like 52 institutions are there which are unregistered, which is really mane questionable. And all of this thing one mas sensata monke borok ni or see maximum student admission now, maximum student born under now, and all of under see institution on bisingo ma basasini prasan to belai one mas sensa mane it is really something to question about and something to worry about. Indeed, it has become a big worrisome. Tini, today I give thanks to this guy again because of your daringness, because of your himmat, we could bring this topic on the video today. Because the previous cases that we handled, none of them we could bring them to video, and we could not even prove which agents or who did what. Those were failures for us. This also is still a failure for us until and unless we don't get any support. जब तक हमको आपकी घर वाले से, आपके मम्मी पापा
या जो भी जितना भी स्टूडेंट है, उन लोगों के मम्मी पापा से अगर हम लोग सपोर्ट नहीं मिलते हैं, देन यू आर अ फेलियर टुडे। व्हाई? बिकॉज आपने हिम्मत करके सामने आया, सामने आने के बावजूद आपके घर वाले बोलता है कि यार ये डरते हैं, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ गाली देगा, कोई खराब बोलेगा, हम प्रॉब्लम नहीं चाहिए करके अगर बैकआउट कर गया अभी, तो मतलब समझो कि यू आर द बिगेस्ट फेलियर। हमारा कुछ नहीं है, बिकॉज वी केम बेस्ड ऑन योर कंपनी, वी केम हियर बेस्ड ऑन द पॉइंट दैट यू केम अप विद अस। वी आर नॉट, you know, we cannot do anything until and unless we don't get a physical and mental support from your side। वो डर जो दिमाग में है कि पता नहीं कल क्या होगा, अगर हमने ये केस को ऐसा उठाया तो कल हमको पता नहीं कौन क्या करेगा। एंड दिस वाज रियली रॉन्ग कि सुकुमार ने इनकी घर वाले को धमकी दी है। अ थ्रेड जो दिया है वो सबसे गलत बात है। मैं कहता हूं कि सुकुमार क्यों, आपके घर वाले they are the one who discussed with him, they are the one who had promised of something which could not be done, right? गलत promise करा गया है। Personal call my mother and say that college is good. College is what? Good. Didn't talk to him. Personally. हाँ, वो तो she was also principal or a teacher of the college, right? No, he's just an admission administrative. So there was a Lakshmi, Lakshmi. but we don't know who Lakshmi is at this point. Now आप लोगों का पॉइंट ये है कि लक्ष्मी कौन है, ये आप, योर मदर, योर पेरेंट्स डजंट इवन नो, योर पेरेंट्स नो whom? Sukumar, right? So who promised your mom and dad about your facilities, about your fees, about the scholarships? Who promised? Sukumar. So he should be the one on whom the case should be filed today. मैं यही गुजारिश करता हूँ हर पेरेंट्स, अगर आप लोगों के बच्चे अभी, आई नो बहुत सारे बच्चा लोग हैं जो कॉलेज में पढ़ के आज बहुत मुसीबत में है, बट आप लोग आगे नहीं आ रहा है ये केस डालने के लिए या फिर ये बताने के लिए कि हमारे साथ ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग डरते हैं कि ताकि कहीं आपके बच्चे को कुछ हो ना जाए। हम बोलते हैं बीइंग एज अ त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन, द डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन, की आपके बच्चे को कुछ नहीं होंगे। आज तक हमने एक भी बच्चे को एक खड़ूस आने नहीं दिया है, जितना भी केसेस हमने हैंडल करे हैं। सिमिलरली अगर आप लोग हमारे सपोर्ट करते हैं तो हम आगे बढ़ सकता है, पर अगर आप लोग हमारे साथ नहीं देंगे तो हम जीरो है, कुछ नहीं है। वी आर इक्वल टू नथिंग, राइट? अभी यहाँ धमकी वॉज द बिगेस्ट पॉइंट दैट हैज कम अप। ये होना नहीं चाहिए था। धमकी मिलने के बावजूद, इफ योर पेरेंट्स डजंट गो फाइल अ केस अगेंस्ट दिस गाय, मीन्स योर पेरेंट्स आर, मैं सीधा बोलता हूँ इन इंग्लिश अगर बोलता है तो कावर्ड्स। कावर्ड्स जिसको बोलता पता है, डरपोक। डरते हैं कि कहीं ये कुछ ना आ जाए, कि कुछ ना कर ले। बैंड किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। यू हैव द राइट्स, आपके पास वो राइट्स है कि आप किसी के भी ऊपर जाके कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपके साथ गलत हुआ है तो। बट अगर आप आगे नहीं आता है तो थर्ड पर्सन कैन नॉट कम एंड हेल्प यू। Okay. One more thing to note about the contract Khaipro. Tani bangai contract important in this tapote buku song. Last so sengsoy ya kesegang there will be one clause in English. I will say what it usually. Wherefore, if any of the agreement that has been agreed upon by the party is been breached, then we can either go for negotiation or we can take a legal action on their behalf. Haike honoi se pore roi se abono sign ma khairo. Agent roni abo daitto. Yes. There is a duty of an agent. Abo je parents porewa siapno bono sawi ma khnarnai, or else bo kaisa copy bo ya phaimarnai. There is a pattern how to admission. So even tabo agent onai tongangke, it is a guide for you guys. You can have a proper affiliation of the job khaimong sogate be kaham ke khaimano, and we are not telling any student to not go with agents. You can go with agents. And we are not against any agents. What we require is that fraudulently namo tathandi. Why? Because copy kare, documents thik kare, signature thik kare. Abani bangai agent rok blame thang pai, student rok ni blame thang pai. So now simple. ये केस में भी हम I would say I would not compromise from my side. अगर ये लोग कुछ compromise करते हैं, इनका problem होता है। अभी they have two options here. Yeah, as he said, इन लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं।
एक कि जाओ लीगल एक्शन लो, कंप्लेन मारो, बट कंप्लेन मारना जरूरी है। कंप्लेन मारने के बाद अगर एजेंट आके बोलता है कि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम द एजेंट साइड, नहीं तो ये बोले कि ठीक है आपका जितना भी लॉस हुआ है हम आपको भरपाई कर देंगे, देन यू कैन टेक बैक द कंप्लेन फ्रॉम द पुलिस स्टेशन विदाउट फेल। ऐसा है कि पुलिस स्टेशन में कभी भी कंप्लेन करो, अगर आप दोनों का बीच में मनवाली हो जाता है, देन यू कैन विड्रॉ द केस एट एनी टाइम। ठीक है, तो आई डोंट नो कि what your mom is going to say, what your dad is going to say, but my only request is if you guys don't come forward filing a case against this issues, clear we are nothing, we are no one here, we are just a third person। अगर आप लोग आके हमारे पास कंप्लेन लेटर लाके देते हैं, I am ready to take full-fledged action from my side। जितना भी पॉसिबल होंगे, I am ready to fight if there is a support, 100% support from your parents, from you, from your parents। Similarly, last students को मैं वही बात बोले थे, if you support me today in this office itself, on the live video, if you support me today, if you come up with things, I am ready to help you to the core। उन लोगों को बचाया हमने, उन लोगों के लिए, फिर भी हम लोग that is considered as failure, because आज इन लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ है, अगले साल ये एजेंट लोग रोकने वाला नहीं है, नहीं रुकेगा एजेंट लोग, अगले साल वो फिर they will try to find another trap, they will try to find more students who gets onto their trap, क्योंकि this is their source of income, this is how they make money for themselves। No problem, पानी डालो। This is how they make money for their family। I know कि हम लोगों को पता है कि कॉलेज कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास किसी से कोई कंप्लेंट नहीं आई है, और आप स्टूडेंट खुद मान के आए हैं कि हम इतना फीस पे करेंगे। पर मैं बता देता हूं कि एक जीएनएम का एडमिशन फी फर्स्ट ईयर में होता है 1,10,000 to 1,20,000 to the max। That is including the registration and including the security, some 10,000 bucks and the uniform cost वगैरह लेके 1 लाख से 1,20,000 तक होता है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में होता है 80,000 to 90,000 including the hostel fees, point to be noted, okay, including the hostel fees। This is the standard fees of every colleges, nursing colleges in Bangalore। 1 lakh to 1.10 lakhs is the standard, yeah, max to max 1.2 lakhs depending on the infrastructure also, and that too, but that is including the hostel। second year में भी including hostel ही 80-90,000 होता है सिर्फ। बट यहाँ क्या हो रहा है कि अभी जो एजेंट लोग कहता है कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों को 1,90,000 2,40,000 तक कभी इन लोगों ने छापा है on the prospectus that they give you। every prospectus that an agent gives are not originals, they are not from the college। हर कोई एजेंट अपना कॉस्ट डाल के अपना पैम्पलेट बनाता है, एडवर्टाइजमेंट करता है। We have seen one more pattern when we are dealing with cases। जब हम लोग डील कर रहे थे, कुछ एजेंट्स ऐसे भी थे, they have just copy paste the duplicate signatures and they have given it as a receipt, and most of the students receipt मान नहीं रहो। We used to ask them, show us the receipt। Just by looking at the receipt we can just say that it is duplicate, because most of them are blurred, signature नकली रहा, no affiliation, even bona fide letters were given duplicate। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर एजेंट की तरफ थ्रू भी आना है, जो भी एडमिशन का फीस होगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे, आप डायरेक्ट कॉलेज में आओ, कंफर्म ओनली वंस यू रीच कॉलेज। फीस देना है कॉलेज में तो डायरेक्ट, एजेंट को नहीं देना है। क्यों ऐसा क्या होता है कि एजेंट यहाँ आपको बताया 1,90,000 इज योर फीस या 2,40,000 इज योर फीस, अभी क्या करेंगे, आपने इस बार दे दिया 70,000, और लोग 50,000 ही दे दिया, 50,000 दे दिया, ये 50,000 कॉलेज में नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये अपना कमीशन समझ के पहले उठा लेगा, एजेंट अपना कमीशन समझ के उठा लेगा, उसके बाद
जो पैसा आता है वो उसमें भी अपना जब तक अपना फी अपना जो कमीशन जब तक नहीं उठा पाएंगे तब तक वो कॉलेज में 1 रुपया भी नहीं, समझे? दिस इज हाउ द स्कैम हैपेंस और दिस इज हाउ द कमीशन कम्स ऑफ फॉर द एजेंट्स। एंड एक एजेंट एक स्टूडेंट पे समझो अगर 70,000 से लेके 1 लाख तक की कमीशन बनाते हैं, समझो हमारे गरीब तिपरासा लोग कैसे ये फीस पे करेंगे। फीस बताया गया 1,90,000, स्कॉलरशिप मिलता है 60-70,000, बाकी का फीस कैसे? मतलब अनदर 1,10,000 इज 20,000 दे हैव टू अरेंज, राइट? गरीब फैमिली के लोग कैसे अरेंज करेंगे? लोगों को उकसाता है कि लोन मिलेगा, तो लोन मिलने से भी लोग किसे चुकाएगा वो नहीं समझते। ये लोग नहीं समझता, इन लोगों के पास दिल नहीं है भाई। दे आर हार्टलेस, दे ओनली वांट फॉर देमसेल्फ, दे आर सेल्फिश। पॉइंट टू बी नोटेड, ये अपने मम्मी पापा से क्लियरली बात करो कि दिस इज व्हाट इट इज। ये वीडियो तो बहुत लंबा हो चुका है, आई नो मोस्ट ऑफ देम माइट नॉट इवन वॉच टू द फुल, हाउएवर स्टिल कोई तो होगा जो फुल तक देखेंगे। जो फुल तक देखता है इधर आके थम्स अप मार दो प्लीज। बहुत लंबा हो गया है, ऑलमोस्ट 1 hour plus I guess. Yeah, and the last guide that our student leader will give you guys, and please note it down. The last point from my side is, without your support we are zero, without your complaint we can do nothing. Please. So last kaise important and most important, how will we approach, how will we move ahead with complaint? अगर आपके साथ ये घटना घटा कि एडमिशन स्कैम आपके बच्चे के साथ हुआ, मेरे साथ स्कैम हुआ है, हम लोग कैसे तब बक्स खा रहा है? सिंस आई हैव सेड दैट कि कॉपी चाहिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, वी डोंट हैव कॉन्ट्रैक्ट, वी कैन नॉट, एंड एजेंट विल से द सेम थिंग, आई हैव नॉट मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट, नो। सो उसमें आपके पास कुछ पावर नहीं, यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी, बट I am telling you 100% you have an authority. Why? Because the first thing that you can gather as an evidence that nang case khai khang ke evidence nai ni adeba court police nai ni adeba evidence and can gather all the admission receipt, and it admission receipt is not necessary tabok takute bukuk som tabok sine IPC kurikha BNS ka taluk pa tabok electronic email porjonto je WhatsApp ni text porjonto screenshot khaibai narabi tongman tabok, and it is accepted in court. There is one more benefit for us. So email, fee receipt, admission receipt, bank transfer, check transfer, UPI je tong ya de UPI potro moson screenshot khaiwi naru tongbai jadi, and fake admission je letter tomani bono batakhi bilai di bono sanasoro suita ta salai di te brochures tongo, pamphlets tongo, je niromni on spot khaimani receipt tongo, loan documents, the documents je mo tomani screenshot, any sort of threatening, I am telling you from our side, any sort of threatening is unacceptable, and which is exactly criminal forcing, and it will be pointing toward negligence or the complaint like hanke tani hokanke agent rokono did not threatening khaimaya, and but they don't have any authority to threaten. And by ke file khainai ni thang khanke je affiliated je college tongmani, first affiliated the college tongmani और जागो कॉन्टेक्ट हाईवे नाइले जादी तब बेंगलोर यूनिवर्सिटी फान खा बिनी प्रॉब्लम के जे बो एडमिशन खारी रोजाक मानी बुनी आलादा जे बिनी रिसीवर सुजा तो माने बिनी आलादा, सो देयर इज मोर अगेन प्रॉब्लम, बट मोस्ट ऑफ द जे एजेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ तोंग कमानी देयर इज वन टिप, you can go to your institution nini je the ran hab mani bo de hab kha bahai kha consult khaiwe, if possible principal or else mentor by cox haini di अब by Indian के जे आयन से अंसामनी Indian जे nursing council और राजीव गांधी जे health science नि तो मनी बरो में अंदरो न complaint खाई मनी बरो नि website थांगई complaint खाई बाई मन, and कर्नाटक state nursing council maximum ची nursing institution रो कम्बाई दो और वो निरो complaint खाई में उसी, and टेक ऐसा निरो police रो complaint lodge खाई नि थांग प्रो जोता अंजे सामनी evidence थोंग gather खाई बाई police nyoro xerox copy kaisa khaiwe staple khaiwe kaisa statement copy written statement bono ya phawi roti, so it doesn't mean it's a FIR. When
there is a when police will take the cognizance, जखन ते पर नुकमा की कुछ गड़बड़ी है वहाँ पे, that time they will use it and that statement will turn into FIR. अमता है step तो. So agent of one more. If you guys are threatening and all, it will directly point to cheating and intimidation, okay? And then breach of trust, of course it will be breach of trust. And you know what is the compensation of breach of trust? You know, agent of a student of a any contract, no oral pa khaika, written pa khaika, if it's breach of trust, then it is a high responsibility for agent to fulfill that compensation by paying them back. Kuno dino nang student thangin nang threaten khaimaya, student robo sring, no threaten khaijagi ta tongbai jadi. You have the authority, you have been given vested right. Ni oro right tongo. And FIR khaibe mani pore, only anke. One more thing, you can go ahead, cyber crime of Buthangar, niro complaint file, khaile mano and khaile ti. Cyber crime. This all are been given by government. Jackson use khayanke, it's up to you guys. And for us, Santak Foundation on the this list. Yes, I have. You can post in the Facebook. I will post it later. Santak Foundation on the TIS Bangalore on the until and unless we got support from you guys to us as a public interest, because education involves public interest. Until we got any authority from your side, we cannot move ahead and just yell at them. We cannot protest and go ahead in the road and say that ki ye log un logon ne hame scam kiya ye sab, because we don't have any problem with agents and we don't want to create problems with agents also. What we want is that they have came forward for a problem tha, and we have received the complaints, because it's our duty to receive the complaint and we are trying to solve it. So now the solution bas kango roi rakha tab ngiro bahai ke bano use khaina यूज करना है नहीं करना है अभी लाइव देखने के बाद आप लोगों के ऊपर है. एंड वन मोर थिंग, द मीडिया और द पब्लिक पब्लिसाइज खाइबनी, दैट इज द मेन टास्क फॉर यू गाइस, दैट द फर्स्ट इफ काउंसलिंग वाज बीन मेड बाय मीडिया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ मीडिया से, तो आप लोग का तो हक बनता है मीडिया से आप लोग एक्सपोज करने का. ये आप लोग का हक डेफिनेटली बनता है, बिकॉज इट्स इन्वेस्टेड राइट फॉर यू गाइस. इफ दे हैव मेड काउंसलिंग, then you have also the right to make a counseling again back that कि इस बंदे ने ये admission कराया, ये scam हमारे साथ हुआ है. Just come forward and say. हाई किसी संजो तो aware ना, हाई किसी संजो तो पालपाक सा थांसे के संग सामने खाई मना. Or else जैसे NGO होंगी, जैसे TISF होंगी, जैसा political or anything, so कुनो दिनों use खाई में, we cannot work at all without support from you guys. That's why we require support. And note and I will share all the informations. You know, again, post no. Fine. So, lock her video, no problem. That's a good one. So, Tabuk, Tini, the session of Pinam Samuel, did you get any motivation from this live session? Kuno sarada musun ko, kuno information convey that kind of musun ko. Please, the last point I wanted to say something. Okay. Kuno to sarada kriha te one last ke, sunga ta mo problem mo tong face fight tong ka te next year 2025-26 ni school exam pa ni ka. Exam of the Pais and Ganoro, my chief Bagaka, agent on call about believe that I did. Now I would believe I can get the problem with Nometasha. I want to the Sokaham, no Naye, Nijani, to investigate. I did Bangalore, and I'm going to get the others of College of Tanam and investigate. They are going to last in the night on of support heavy, but certainly mindset bar can play. So the student on is minutes I don't know. No comment the one of student no kawan of student no yung command student go bro keta monole motivate sikhaya na monole motivate khaya kare demotivate sikhaya. Okay, amo keta mong khabar no comment hame one of bul lokor no musungzagli an bobisi a bul lokon ko khaina bobisi he ama hable je truth abos saule no ka comment hame rela nijen tibrasa to je support khaya kare se no comment hame ro bad comment rela amo keta amo to kon sate koi अब ना support खाई दे motivate खाई दे अब टेकी सब मसाओ comment रखो ना बुई टेकी सब बासा ही मानो काम forward खाई मानो ना खाई demotivate सिखाई लो अब ना once कोई खाई बेजी खाई खान खाई जो दासों problem हो उनका
eko sar dinesh no bono ro contact khaima no eko yang dara bono contact khaima no. We are always there for our people. We are always there, 24/7. We will always tell. My president, our vice president will go anywhere you say. बस फोन कर दो, लोकेशन भेज दो, पहुंच जाएगा 2 मिनट में. इतना फास्ट सर्विस है. Then there is a last Sukumar Deborma is a last city. दो बॉल आसिने नांगनाय धमकी रमानी कैसे भी point to be noted. धमकी, the threat that he has given to the parents of all these 3 students who came up in the video is a very wrong thing. And all threat by now, tini all parents of Thokai bini uboro kesri manayo. So go ahead. जो दिन नरक आसक से नरक बुसाने justice माना मुझे हुई तो उनके नरक थांगी police station ना थांगे complaint file claim कर दी सिका file claim file copy चलना रहोडी अवन बोले चले action अवन सिका सुनकुन action नहीं fine असुना ताऊ को खुलन को तेरे इसा भले ना हम बाय ताऊ नरक सुना लगे नहीं तुम्हारे बाकी खाक लायो चुन अम्ती क्या होते हैं वो कबांग में problem रहो solve permanent नहीं and future रो हमारे problem में यहाँ नहीं बाकी चुन avoid permanent नहीं खाक लायो नॉर्मल सपोर्ट तमाम बाकी बलेना खुलूं बलेना हम बाय चिवाई हंसा